Assalamu alaikum students. I'm your chemistry teacher Sumayya Khan, and today we are going to start with your chapter number 5, chemical bonding. Look students, we know that there are 118 known elements. Out of these 118 elements, around 100 elements exist naturally on earth, whereas the remaining elements are synthesized in the laboratory. Now all these elements which we found in nature, except for few like gold, platinum, copper, most of these elements exist in the combined form, either in the form of compounds or in the form of molecule. We will not find carbon atom or oxygen atom in the atomic form in nature. We are not going to find them in the free form. They are always going to exist in the form of molecules or compound. For example, we know that water is made up of 2 hydrogen and 1 oxygen. Okay, so why water exists in this H2O form? Why hydrogen, or what is the force that is responsible for keeping the 2 hydrogen and 1 oxygen together? So today we are going to understand the type of force of attraction that are responsible for keeping the atoms of different elements together in the form of compound. ठीक है? Again I am going to speak the same thing in the Urdu. Look students, आप जानते हैं कि यहाँ पे 118 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो गए हैं, जिसमें से 100 एलिमेंट्स, अराउंड 100 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरली दुनिया में पाए जाते हैं, और बहुत से जो अराउंड 18 और मोर देन 18 एलिमेंट्स जो है वो सिंथेसाइज किए जाते हैं लेबोरेटरी में. ठीक है, अब ये जो सारे एलिमेंट्स, जो डिफरेंट एलिमेंट्स है जिससे पूरी दुनिया बनी हुई है, ये सारी चीजें कभी भी इंडिपेंडेंट फॉर्म में हमको नहीं मिलती. हमको कहीं पे एक पहाड़ नहीं मिलता है जहां पे रखा हुआ है कि आयन है ये. ठीक है, हमको हमेशा पता चलता है कि चीजें कंबाइंड फॉर्म में, कंपाउंड के फॉर्म में मिलती है. आपको कहीं सोडियम रखा हुआ नहीं मिलता, कहीं क्लोरीन रखा हुआ नहीं मिलता. ठीक है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है. अब कौन सी ऐसी फोर्स है जो इनको एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रखती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं. अब which kind of chemical bondings are possible in different compounds and molecules? यहाँ पे बहुत तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है जो रिस्पॉन्सिबल हो सकती है कंपाउंड के फॉर्मेशन में या मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में. तो बेसिकली हम लोग 2 टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिटेल में पढ़ने वाली हैं. बट बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेट्स गिव सम क्रेडिट टू द 2 chemists who have worked very hard in explaining why do compounds or molecule exist in this way, why elements does not exist independently and why they exist in the form of compound, and why do they undergo bond formation, or why do they undergo attraction with each other. Okay, there are 2 known famous scientists who proposed their idea in the year 1916. Both of these scientists have done their work separately. उन्होंने अपना काम अलग अलग मुल्क में अपना independently किया, but the thing they have explained was same. The scientist's name was G.N. Lewis and W. Hossel. Gilbert Newton Lewis was an American chemist, and Walter Kossel was a German chemist. They have presented a theory to explain the formation of bond in the different compounds and molecules in the year 1916. Now they came up with a theory which is now known as electronic theory of valency. Now first of all you should understand the meaning of valency. Valency is what? It is actually the number of bonds made by an element in a compound or in a molecule. So in normal cases,
every element will show certain valency. They may have more than one valency also, but normal valency of the element gets satisfied easily or can be explained on the basis of their theory proposed by Cossell and Lewis, that is electronic theory of valency. Now students, I want you to think that whenever you think about an atom, you should understand that an atom is made up of some subatomic particles. आपको पता होगा कि हर एटम के जब आपसे पूछा जाता है एटम किन चीजों से बना होता है तो आप हमेशा बोल सकते हो एटम्स आर मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. But proton and neutrons are present in the nucleus and that is the concentrated mass of the atom, and electrons are the entities that revolve around the nucleus in a specific path which is known as orbit or shell. आपको पता है एक एटम में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट और शेल. But according to the theory proposed by them, Cossell, they have assumed that an atom is a concentrated mass made up of a kernel and the outermost valence shell. इसका मतलब अब आप जब एटम को सोचेंगे तो सोचिए कि there is neutron and proton in the center, that is your nucleus, okay, and we know that there are different shells surrounding the nucleus, okay, and in these nucleus there are some electrons, okay, ये हमको पता है. अब according to the theory proposed by Cossell, he said that कि जब आप किसी भी एटम को अज्यूम करोगे तो आप इसको अज्यूम करोगे दो टुकड़ों में, in two parts, okay. So what is the first part? The first part is composed of the nucleus and the other electrons which are surrounding the nucleus except for the outermost shell. आप outermost shell को अलग गिनोगे, ठीक है. So this entire part is your kernel, okay, that is nucleus plus electrons inside the inner shell, inside the shells inner to the outer shell, okay. आपका कर्नेल क्या होता है? न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाकी के वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो अंदर के शेल में है एक्सेप्ट फॉर द आउटर मोस्ट शेल. नाउ ही सेड दैट द आउटर मोस्ट शेल कैन हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड कैन एक्वायर स्टेबिलिटी. अगर किसी भी एटम के बाहर वाले शेल में, जो सबसे बाहर वाला शेल है, द आउटर मोस्ट शेल विच इज ऑल्सो नोन एज वैलेंस शेल, इसको हम लोग बोलेंगे वैलेंस शेल. तो किसी भी एटम का जो वैलेंस शेल होता है that shall take part in the bond formation, okay. Now if there are 8 electrons in the outermost shell like the noble gases, then this atom will not undergo any kind of bond formation. अगर इसके outermost shell में या वैलेंस शेल में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे तो ये एटम किसी के साथ बॉन्ड बनाने नहीं जाएगा. लेकिन अगर इसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, if it contains less than 8 electron, then this will go for the bond formation, okay, and it will make a compound or a molecule either by taking the electrons from the other atom or by giving the electrons to the other atom or by sharing the electrons with the other atom. Understood, students? What is valence shell? The outermost shell of the atom is known as valence shell, and the electrons that are present in the valence shell are known as valence electron. What are valence electron? The electron that are present in the outermost shell or the valence shell are your valence electron, okay.
In this diagram, I have not shown any electron in the valence shell. ऐसा नहीं होगा, हमेशा आउटर मोस्ट शेल में कुछ ना कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तभी उसको हम लोग बोलेंगे वैलेंस शेल. अगर आपने वैलेंस शेल कंसीडर किया और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं कंसीडर किए तो वो आपका आउटर मोस्ट शेल होगा ही नहीं. सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, whenever any atom of any element goes for the bond formation, their valence shell undergoes sharing of electron or taking of electron or giving away of electron. Understood? Now, on the basis of what is the thing an atom is convenient in doing, it will make that kind of bond. अब जो काम वो आसानी से कर सकेगा, अगर उसके लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स देना आसान है तो वो देगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन लेना आसान है तो ले लेगा, और कभी कभी शेयरिंग करना इज इजी तो वो शेयर कर लेगा. On the basis of this, we can say that there are two types of force of attraction that may exist during a bond formation. Number one is covalent bond and number two is ionic or electrovalent bond. Now let's discuss in detail what is mean by electrovalent and what is mean by covalent bond.